ये है 2016 का पेपर 2 का मैथमेटिक्स। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 34 निकलेट q इक्वल टू 100 410 5041 and I be the identity matrix of the order 3 is q equal to qij if in a matrix such that p50 minus q equal to I, then the q31 plus q32 by q21 equals, so p is equal to 100 410 1541, p of square equal to 140 811 810 or 16 plus 32 81. So pq is equal to 100 1210 16 plus 32 plus 48 1210 from the symmetry. P50 is equal to 100 210 or 16 50 51 by 2 201. As P50 minus q is equal to I, so q31 is equal to 16 into 50 into 51 by 2. q32 is equal to 200 q21 is equal to 200. So q31 plus q32 by q21 is equal to 16 into 15 into 51 by 2.2 plus 1 is equal to x और 1 plus 1 is equal to 103. इसका आंसर कितना जाएगा? 103 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द रीजन एक्स बाई बिलोंग टू आर स्क्वायर बाई इज मच ग्रेटर दैन रूट ओवर एक्स प्लस 3 और 5 बाई एक्स 9 प्लस लेस दैन इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया ए -4,1 बी -4,0 A1 A2 -3,0 ओ C1,0 D12 दिया हुआ है। So clearly required area is equal to area of the trapezium ABCD minus 1 plus A2 and the area of trapezium ABCD is equal to half 1 plus 2 into 5 is equal to 15 by 2. So A1 is equal to integral minus cos minus 3 root over minus x plus 3 dx यानी 2 by 3 and A2 is equal to minus 1 x plus 3 के root dx is equal to 15 by 3. From the equation 1 we get required area is equal to 15 by 2 minus 2 by 3 plus 15 by 3 is equal to 3 by 2 and the value ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका वैल्यू जाएगा 3/2। सही है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द सिग्मा के बराबर 1 से 13 1 बाई साइन पाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 साइन के पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 16 के पाई बाई 6 इक्वल टू, तो वी हैव 2 इंटू सिग्मा के बराबर 1 से 13 साइन के पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 माइनस के माइनस 1 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 by sin pi 4 plus k minus 1 pi 6 into sin pi 4 plus k pi 6 is equal to 2 sigma के बराबर 1 से 13 cot k minus 1 pi 6 plus pi 4 minus cot k pi 6 plus pi 4 is equal to 2 cot pi 4 minus cot 13 pi 6 plus pi 4 is equal to 2 minus 1 minus cot pi 12 is equal to 2 1 minus 2 minus root 3 is equal to 2 into root 3 minus 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा? C 2 into root 3 minus 1। आगे क्वेश्चन निकलेट बी आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर आई इक्वल टू 1 2 एक्स एक्स सपोज log e b1 log e b2 log e b4 are in the arithmetic progression with the common difference log e2. Suppose a1 a2 x x are in the arithmetic progression such that a1 is equal to b1 and the a51 is equal to b51. if t is equal to t1 b1 इसी तरह से 51 तक and f is equal to a1 a2 इसी तरह से 51 तक, then तो log e b1 plus log e b2 इसी तरह से log e bx4 ap जो है d is equal to log e2 b1 b2 b3 b1 gp is equal to r, तो b1 to b1 2 स्क्वायर b1 और 2 के स्क्वायर b1 is equal to gp, तो a1 a2 एक से एक ap आ जाएगा given a1 is equal to b1 and a51 is equal to b51, तो a1 plus 50d 250 b1 और a1 plus 50d 250 a1 as a1 is equal to b1. Now t is equal to b1 251 minus 1 and s is equal to 51 by 2 a1 plus 50d. t is equal to a1 dot 251 minus a1 t is less than a1 dot 251 is ये पहला हो गया। f is equal to 51 by 2 a1 plus a2 plus 50d f is equal to 51 by 2 a1 plus 2 के पावर 50 by a1 into a1 f is equal to 5 1 51 a1 by 2 plus 51 by 2 into 50 a1, तो f is greater than a1 dot 2 के पावर 51 clearly f is greater than t from the equation 1 and 2. Also a के पावर x is equal to a plus 100d और b के पावर x is equal to b plus 200 b डॉट b1 डॉट 2 के पावर 200 2 के पावर 100, तो a के पावर x is equal to a1 plus 100 2 के पावर 50 a1 minus a1 by 50 b के पावर x is equal to 2 के पावर 100 into a1 a के पावर x is equal to a1 plus 2 के पावर 51 a1 minus 2 a1 a के x is equal to 2 के पावर 51 a1 minus a1 a के x is less than 2 के पावर 51 a1. Clearly b के x is greater than a के x from the equation 3 and 4.
इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, एफ सी ग्रेटर देन टी एंड द ए एक्स वाई इज लेस देन बी एक्स वाई। नाउ अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द minus pi by 2 so pi by 2 integral cos x square cos x by 1 plus x dx is equal to, let I is equal to minus pi by 2 so pi by 2 x square cos x by 1 plus ex dx 0 so pi by 2 1 plus ex plus 1 by e के पावर माइनस x into x square cos x dx। अब 0 से pi by 2 x square cos x dx इक्वल टू x square sin x 0 से pi by 2 minus 2 into 0 से pi by 2 x sin x dx। अब pi square by 4 minus 2 minus x cos x 0 से pi by 2 plus 0 से pi by 2 1 into cos x is equal to pi square by 4 minus 2 into 0 plus 1 is equal to pi square by 4 minus 2। तो इसका आंसर कितना जाएगा? pi square by 4 minus 2, आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेट पी विद द इमेज ऑफ द पॉइंट 317 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन x minus y plus z equal to 3, then the equation of the plane passing through the point P and containing the straight line x equal to 1, y equal to 2, z equal to 1 is, तो लाइन ए पी x minus 3 by 1 by minus 1 by minus 1 और z minus 1 by 1 is equal to lambda। तो f हो जाएगा 3 plus lambda 1 minus lambda lambda plus 1 lies in the plane, तो 3 plus lambda minus 1 minus lambda plus lambda plus 7 is equal to 3, तो 3 lambda is equal to minus 6 lambda is equal to minus 2, तो f 135 और p minus 153 for required plane x minus 0 y minus 0 z minus 0 1 to 1 minus 153 0 और x minus 4y plus 7 z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर A317 x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और P हो गया और ये पॉइंट हो गया 0 P आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप दिए हुए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कि x माइनस 4y प्लस 7 जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस mod of x को माइनस एक्स प्लस बी mod of x sin x क्यूब प्लस एक्स का mod, देन f इज ए। तो इफ x क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द cos x क्यूब माइनस एक्स का mod इज इक्वल टू cos x क्यूब माइनस एक्स एंड x क्यूब माइनस एक्स इज लेस देन 0 देन द cos x क्यूब माइनस एक्स का mod इज इक्वल टू cos x क्यूब माइनस एक्स। Similarly, b mod of x sin x cube plus x is equal to bx sin x cube plus x for all x belong to R, and f of x is equal to a cos x cube minus x plus bx sin x cube plus x, which is a composition and the sum of a differential function, therefore always continuous and differentiable. Let ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? a और b। डिफरेंशियल एट x इक्वल 0 इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, और b भी जाएगा डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 इफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन के पावर एन एक्स प्लस एन बाई 2 इसी तरफ एक्स प्लस एन बाई एन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4 इसी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एक्स बाई 1 बाई एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग ग्रेटर देन 0। देन तो एल एन एफ ऑफ एक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स बाई एन एल एन पाई एक्स प्लस 1 बाई आर एन, ठीक है, आर बाई 1 से एन और आर बाई 1 से एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई आर बाई एन के होल स्क्वायर इंटू पाई आर 1 से एन आर बाई एन। तो एक्स लिमिट एन टेंड्स इन्फिनिटी 1 बाई एन आर बाई 1 से एन एल एन एक्स आर बाई एन प्लस 1 एक्स बाई आर बाई एन के होल स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स 0 से 1 एल एन 1 प्लस टी एक्स बाई 1 प्लस टी एक्स स्क्वायर डी टी पुट टी जेड इक्वल टू पुट टी एक्स इक्वल टू जेड एल एन एफ ऑफ एक्स 0 से एक्स एल एन 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई डी जेड, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ बाई एक्स एल एन 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइन स्कीम फॉर द एफ डैश एक्स इक्वल टू अल्फा एफ डैश 1 इक्वल टू 0, f of 1 by 2 is less than f of 1 and f of 1 by 3 is less than f of 2 by 3, f dash 2 is less than 0, else for f dash 3 by f of 3 minus f dash of 2 by f of 2 is equal to ln 4 by 10 minus ln 3 by 5, ln 4 by 6 is less than 0, f dash of 3 by f of 3 is less than f of dash of 2 by f of 2। तो इसका आंसर कितना जाएगा? बी और सी। f of 1 by 3 is less than equal to f of 2 by 3 और f dash of 2 is less than equal to 0, तो बी और सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेट एफ r 0 to infinity and the g r to r be twice decimal functions such that f double dash and the g double dash are the continuous function on the r. Suppose f of dash of 2 equal to g of 2 is equal to 0, f dash of 2 is not equal to 0 and g dash of 2 is not equal to 0. If the limit f of x g of x tends to 2, f dash of x g dash of x equal to 1, then in the L'Hopital rule, limit x tends to f dash of x gx plus f of x g dash of x by f double dash of x g double dash of x plus f dash of x g double dash of x is equal to 1. f of 2 g dash of 2 by f double dash of 2 g dash of 2 equal to 1, f dash of 2 equal to f of 2 is greater than 0.
Also D the right and the option C is wrong. Also f dash of 2 equal to 0 and f double dash of 2 is equal to 0. So x बराबर 2 क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमम. इसका आंसर ऑप्शन है एफ है जो लोकल मैक्सिमम एट इक्वल टू और डी भी जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डबल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग टू आर. अगला सवाल है कि लेट u इज इक्वल टू u आई कैप प्लस u2 j कैप प्लस u3 k कैप be unit vector in the r square and a w is equal to 1 by root 6 I cap plus j cap plus 2 cap. Given that there is a vector b in the r cube such that mod of u cross b is equal to 1 and the w dot u cross b is equal to 1. Which of the following statement is correct? So mod of w u mod u cross b cos phi equal to 1 and the phi equal to 0. U cross b is equal to w and the mod of b sin theta equal to 1. There may be infinite vectors b is equal to op vector such that p is always one unit distance from the u. From the function C, u cross b is equal to I cap j cap k cap u1 u2 0 v1 v2 0. W is equal to u2 u2 v3 I cap minus u1 v3 j cap plus u1 to u1 v2 minus u2 v1 k cap. तो u2 v3 1 is equal to 1 by root 6 minus u1 v3 is equal to 1 by root 6. तो mod of u1 is equal to mod of u2. For the option D, u cap cross v cap I cap j cap k cap u1 0 u3 v1 v2 v3. W cap is equal to minus v2 v3 I cap minus u1 v3 minus u3 v1 j cap plus u1 v2 k cap minus v2 u3 is equal to 1 by root 6 u1 v2 is equal to 2 by root 6. इसलिए 2 mod of u3 is equal to mod of u1. So option D क्या हो जाएगा wrong. तो B और C जगह there infinitely many choice for which B have for such B और C भी if u unit cap u cap lies in the xy plane then the mod of u1 is equal to mod of u2. तो B और C जाएगा इसका आंसर. Next question is let P be a point on the parabola by a square is equal to 4 of x which is at the 40 distance from the center f at the circle x square plus y square minus 4x minus 16 by plus 54 equal to 0. Let Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. Then the f2 comma 8 दिया हुआ q दिया हुआ p दिया हुआ y square equal to 4x. Point P lies on the normal to the parabola passing to the center of the circle. So y plus t is equal to 2t plus tq 8 plus 2t is equal to 2t plus tq t is equal to 2t t equal to 2 or p equal to 4 comma 4 sp equal to root over 4 minus 2 whole square plus 4 minus 8 square sp equal to 2 root 5 sq equal to 2 p equal to 2 root 5 minus 2 sq by qp is equal to 1 by root 5 minus 1 is equal to root 5 plus 1 by 4. To find the x intercept put y equal to 0 in the 1 x equal to 2 plus t square x equal to 6. Slope of normal common normal is equal to minus t equal to minus 2. तो slope of the tangent equal to 1 by 2. तो a जाएगा sp equal to 2 root 5 b जाएगा एस क्यू इज टू क्यू पी रूट 5 प्लस 1 इज टू रूट 2 और मतलब सी जाएगा इसके बाद से द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी इज 6 और डी जाएगा द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एट क्यू इज 1 by 2. इसका आगे फिर है कि लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. सपोज एस जेड बिलोंग टू सी जेड 1 by 1 a plus iota b t belong to r t not equal to 0 where iota is root minus 1. If z is equal to x plus iota by and the z belong to x then the x comma by lies only. तो x plus iota by equal to 1 by a plus iota bt x plus iota by equal to a minus iota bt by a square plus b square t square. Let a not equal to 0 b not equal to 0 x is equal to a by a square plus b square t square by equal to minus bt by a cube a square plus b square t square. तो by x is equal to minus bt by a t is equal to minus a by a bx put in 1 x a square plus b square a square by square b square equal to x a square x square plus by square equal to x square plus by square minus x by a is equal to 0. So x minus 1 by 2 a whole square plus by square equal to 1 by 4x square and option A is incorrect. For a not equal to 0 b is equal to 0 x plus iota by is equal to 1 by a x is equal to 1 by a by is equal to 0 z lies on the x axis option C है जो correct आएगा. For a is equal to 0 b not equal to 0 x plus iota by is equal to 1 by iota bt और by is equal to minus 1 by bt iota x is equal to 0. तो z lie on the y axis तो ऑप्शन डी भी क्या जाएगा करेक्ट. तो जाएगा ए द सर्किल विद द रेडियस 1 by 2a and the center 1 by 2a comma 0 for a is greater than 0 b is not equal to 0. We see the axis for the a is not equal to 0 b is equal to 0 and the axis by axis for the a is equal to 0 b is not equal to 0. तो a से डी जाएगा. अगला सवाल है कि which of the following statement is are correct. तो क्वेश्चन इसमें ऐसा है पूरा कि लेट a lambda m belong to r. Consider the system of the linear equation ax plus 2 by ax plus 2 by is equal to lambda 3x minus 2 by is equal to mu. तो which of the following statement is correct.
x plus 2y is equal to lambda, 3x minus 2y is equal to mu. Parallel for a is equal to minus 3 above lie will parallel or consonant. Parallel for the lambda plus mu not equal to 0 and consonant if lambda plus mu is equal to 0. And if a not equal to minus 3 lies on the intersecting unique solution, then for a B C D. If a not equal to minus 3, then the system has a unique solution for all lambda and the mu. If lambda plus mu is equal to 0, then the system has the infinitely minus solution for a is equal to minus 3, or if lambda plus mu not equal to 0, then the system has no solution for a is equal to minus 3. अगला क्वेश्चन है कि लेट f tends to minus 1 for 2r and the g minus 1 for 2r be a function defined of f of x equal to x cube x square minus 3 and the g of x equal to mod of x f of x plus mod of 4x minus 7 f of x, where mod of y denotes a greater integer less than or equal to the y for the y belong to r. Then f of x equal to x cube minus 3, g of x equal to mod of x plus mod of 4x minus 1 mod of x square minus 3. So f is continuous, discontinuous at x equal to 1 root 2 root 3 2 in minus 1 by 2 for 2, and mod of x plus mod of 4x minus 7 is not equal to 0 at x equal to 1 root 2 root 3 or 2. G of x is discontinuous at x equal to 1 root 2 root 3 in the minus 1 by 2 for 2. In the 0 minus delta 0 plus delta, g of x equal to mod of x plus mod of 4x minus 7 minus 3. So g is non-derivable at x equal to 0. ln 1 by 4 minus delta 1 by 4 plus delta. G of x equal to 0 at f of x equal to 0. Derivable at x equal to 1 by 4. G is non-derivable at 0, 1, root 2 or 1 by 4. आंसर आएगा B. If it discontinuous directly at the 4 point minus 1 by 2 and the 2, और आएगा C. G not differentiable directly at the 4 points minus 1 by 2 and the 2. तो B और C इसका आंसर चले आएंगे. अगला सवाल है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है सब. तो इसमें है कि football teams T1 and T2 have to play 2 games against each other. It is assumed that the outcomes of the 2 games are independent. The probability of the T1 winning, drawing, and losing a game against the T2 are the 1 by 2, 1 by 6, 1 by 3 respectively. Each team has the 3 points for a win, 1 point for a draw, and 0 points for a loss in the game. Let x, y, and z denote the total points scored by the team T1, T2 respectively after 2 games. The probability of x is greater than y is, so Px greater than y is equal to P T1 win, P T1 win plus P T1 win, P match draw over plus P match draw into P T1 win. 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 into 1 by 6 plus 1 by 6 into 1 by 2 equal to 5 by 12. तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी 5 by 12. और पी एक्स इज इक्वल टू बाई इज, तो पी एक्स इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू पी मैच ड्रा इंटू पी मैच ड्रा प्लस पी T1 विन प्लस पी T2 विन प्लस पी T2 विन प्लस पी T1 विन. 1 by 6 into 1 by 6 plus 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 3 into 1 by 2 equal to 13 by 36. तो इसका आंसर क्या जाएगा 13 by 36. अगला क्वेश्चन है कि let f1 x1 0 and f2 x2 0 for x1 is less than 0 x2 is greater than 0 with the foci of the ellipse x square by 9 plus y square by 8 is equal to 1. Suppose a parabola having the vertex at the origin and the focus at f2 intersect the ellipse at the point m in the first quadrant and at the end in the first quadrant. The orthocenter of the triangle f1 mn is, तो यहाँ पर m 3 by 2 root 6 minus 1 0 1 0 और n 3 by 2 minus root 6. Orthocenter lie on the x-axis. Equation of the attitude through the m by minus root 6 by 5 2 root 6 x minus 3 by 2. Equation of the attitude through the f1 is equal to y by 0. Solving we get orthocenter minus 9 by 10 0. तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए minus 9 by 10 0. Next step is the tangent to the ellipse at the m and n meet at r and normal to the parabola at m meets the axis of it at q. Then the axis of the area of the triangle MQR to the area of the quadrilateral MF1 and F2 is m हो गया 3 by 2 root 6 minus 1 0 F2 1 0 Q 7 by 2 0 R 6 0 और n 3 by 2 minus root 6. Normal to the parabola at m by minus root 6 equal to minus root 6 by 2.1 x minus 3 by 2. Solving it with y is equal to 0, we get q is equal to 7 by 2, 0. Tangent to the ellipse at m x into 3 by 2 by 9 plus y root 6 by 8 is equal to 1. Solving it with y equal to 0, we get r is equal to 6, 0. Area of the triangle MQR is equal to half into 6 minus 1 by 2 into root 6 and 5 root 6 by 4. Area of the quadrilateral MF1 and F2 is equal to 2 into 1 by 2, 1 minus minus 1 into root 6 equal to 2 root 6. तो आंसर क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो 5:8. तो इसका आंसर आएगा 5:8. यहाँ पर ये मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है.